This is also called braking radiation. German word. और फिर एंड पे मैं जो एक होमवर्क प्रॉब्लम है ग्रीन फंक्शन वाला वो भी करूँगा क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने उसको सेव नहीं किया हुआ इवन सोल्यूशन आपको भेजा उसमें भी वो गलत है so we'll fight here and try to make sense but before that let's do this simple and quick problem जिसका एक variant आपको होमवर्क में भी दिया होमवर्क 4 है उसमें एक प्रॉब्लम है जो मैंने आपसे कहा है कि there is an ion with some charge, an electron is coming towards it, and okay, it's going to be a positive, and let's take some positive charge. It's coming here, it comes to a full stop, and then probably bounces back. अगर ये positive particle है, अगर negative है तो if it is very strong energy, it may go into the nucleus. It doesn't happen because it can close enough because of uncertain frequency. तो उसमें आपने क्योंकि linear acceleration along the direction of propagation, you have to find its radiation pattern in time domain और obviously total power भी find. Today we are going to see this problem in general, and this is actually something which is used for radiation production in the lab as well, X-ray as well. This way you have some charged particles, let's say negative or positive or whatever, and there is a beam of them which is being incident on a metallic target. So it has a lot of nuclei. So ये जो beam of particles है, doesn't matter कि negative or positive. When it goes towards this, because of either acceleration or deceleration, the energy of these particles change, and because of that acceleration, it emits a lot of radiation. So वो radiation pattern जो है वो हम देखेंगे आज के lecture में. So these are called braking radiation because usually it involves alpha particles being bombarded onto some metallic target, and since when they go towards it, their energy decreases and they radiate their energy to compensate for that mass. So to see this thing, let's say that the charge density is some NE of the beam, the beam RE, and the ion density is some Ni, number of ions per unit volume. And before coming to this full problem, let's solve a simple problem of a single ion and a single charge, either going like this or going like that. If it is positive. So when we have a charged particle going towards another charged particle, the trajectory is usually like this. So it's coming with almost a uniform speed v, and when it reaches close to this other charge, then it's deflected either this way or that way. Or let's call this distance b. This b is usually called impact parameter. But this is essentially the distance, the smallest distance between the two ions when they're closest. Okay, and what we want to do is find the power radiated in radiation when during this process. So ये प्रॉब्लम जो है ये काफ़ी मुश्किल है सॉल्व करना, इसलिए कि इसमें जो फोर्स है it's always in this direction, which is neither exactly collinear with the velocity
not exactly perpendicular to it. Right? आपको जो homework में problem दिया गया उसमें you are supposed to assume that this is collinear. Okay? But in general it's neither collinear nor perpendicular. लेकिन चूँकि ये force है ये 1 over r square है, so usually when this particle is far away here or here, the force is negligible. So the force appreciably acts on this charge only when the charge is nearby. So 1 over r square force. Or बल्कि to make things simplest, we can assume that the force only acts when it is in the distance between the two is in the neighborhood of this parameter b. So वैसे तो ये जो distance b है ये smallest distance है. But let's say the force, appreciable force start acting from here to here. And this distance is also of the order of this distance. So to make things we are approximating this. और इससे पहले let me just recall, क्योंकि हमने दोनों केसेस में जो टोटल पावर है वो ऑलरेडी फॉर्मुलेट की हुई है. When beta is parallel to the acceleration, then the total power emitted by the particle is 1 over 4 pi epsilon naught 2 square c beta naught square gamma c. And when beta is perpendicular to beta dot, the total emitted power is इनका जो रेडिएशन पैटर्न है वो दोनों सूत्रों में डिफरेंट है. इसमें जो लीनियर वाली है इसमें अगर आपको याद हो इट वाज जो small gamma है ये sin square था, so that it's radiating perpendicularly, and when the gamma was large it was 1 minus sin square something, so it was radiating like this. So the other power structure में जा रही है, so dp by d omega दोनों का डिफरेंस है. इसका और इसका जो फॉर्मूला है dp by d omega का वो भी डिफरेंट है. But if you integrate over all the angles, the total power in this case and in this case is very similar. There's only difference coming here. लेकिन जो नॉन relativistic केस है, the total power is actually मैं बीटा डॉट को ना लिख देता हूँ a over c और simplicity. A is acceleration. This is a square over. क्योंकि नॉन relativistic केस में गामा जो है 1, तो this is 1, this is 1, तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो सेम. So when the particle is moving slowly, which is usually the case even when we are bombarding particles in usual lab equipment because we don't have relativistic particles, especially X-ray production के लिए, तो particle की speed जो है really 10 power 6 of the order of 10 power 6. A acceleration. So this is the total power emitted from the non-relativistic particle undergoing acceleration. Now, the acceleration in this case we can approximate as 1 over 4 pi epsilon naught z e square m b square. ये जो है ये फोर्स है पार्टिकल में, E इसका चार्ज है और Z E V इसका चार्ज है, तो ये कूलम फोर्स है. So assuming that the distance between the two is approximately b, अगर ये distance change हो रहा है
but the force is appreciable only when the particle is near the ion. So I'm substituting d for r. So this is the acceleration roughly. अगर आप इस acceleration को वहाँ पे substitute कर दें, so you get the power as इसका स्क्वायर लेना है, एक ई स्क्वायर होएंगे क्यूब बन जाएगा 2/3 c क्यूब m स्क्वायर या और टोटल एनर्जी जो है जो रेडिएट हुई है इस पूरे प्रोसेस में we can approximate that total energy by multiplying this power with approximately the time interval during which this radiates. क्योंकि ये है आयन, ये पार्टिकल आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक almost no radiation because it's moving with uniform speed. This particle is far away. The acceleration is negligible. यहाँ से यहाँ तक b आगे no radiation. The radiation only occurs when this is nearby. और अगर ये distance जो है let's say b, then roughly we can approximate this distance as well with b. During this distance, the particle feels an appreciable acceleration, or if this is the distance b and it's going with speed v, then roughly this is p time that it takes for it to travel this distance d with speed v is d by d over. So approximately this is the energy, that is total energy that is emitted by this. M square B D. So ये इसकी जो है वो एनर्जी है जो ये हमने लिखा है, टोटल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और अगर हम ये देखना चाहें कि जो ये पूरी बीम है, अगर बजाय सिंगल पार्टिकल के ये फर्स्ट करें आयन है और ये बीम ऑफ पार्टिकल रहा है, बाद में कैसे so these different charged particles are passing this ion at different distances, so the parameter B is different for different particles in this. So some particles are passing nearby, some are passing a bit far away, और सब जो है जो different energy radiate कर रहे हैं वो different. But we can compute the energy density by computing, let's say, total energy that is emitted by these particles with energy with density Ne. So अगर हमारे पास particles हैं with density Ne और एक की power जो field है, we know this is the field that is being emitted by this, we can write we can think of this nucleus like this, and let's take a differential area. So this is the differential area. तो अगर हम पावर जो टोटल एनर्जी है
जो रेडिएट हो रही है उन पार्टिकल से जो इस स्ट्रिप से गुजर रहे हैं, अगर वो फाइंड कर लें, then you can integrate to find the total energy over this area. So let's say this has some area dA, then the energy radiated by particles passing through this differential area and written as, let's say they're going with velocity v. So this is giving us the current and multiplying it by with this area A and this epsilon here, we get the field radiated by the particles passing through this strip with density n and velocity v. So ये जो n की v है, this gives us the number of particles passing through this area per unit time. This n is number of particles per unit volume. This is distance over time. So the net is number of particles per unit area per unit time, and we multiply it with the energy, and this is the differential area. So actually this should then be P. So this is the power that is being emitted by these particles, because this is the energy per unit time. And the total power emitted by all of this would be the particle passing through some minimum b. So this is the radius b. पार्टिकल जो है वो एक खास डिस्टेंस से ज़्यादा इसके करीब नहीं जा सकते. That won't be allowed by the uncertainty principle. So there is a minimum b, and we can integrate to find the total power from that b minimum to infinity. और अगर यहाँ पे हम ये substitute करें, this is constant, ये चीज़ भी constant है, और 2/3c³ भी constant है, बल्कि z³ भी constant है. ये v जो है इस v से कैंसिल हो जाएगी, and we have b minimum to infinity 1/b³, और ये dA क्या होगा, ये होगा 2πb into d. ठीक है, ये लेंथ है स्ट्रिप की और इसकी थिकनेस लेट्स से d. सो टोटल पावर आ गई हमारे पास Ne 4π∁q c³ 2π इधर आ जाएगा b minimum to infinity dB/b², और ये इंटीग्रल होता है -1/b. इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, b मिनिमम पुट करेंगे तो 1/b min. सो टोटल पावर आ गई 4π. m भी था, m² यहाँ पर मिसिंग है. m² b. So this is the power emitted by the beam of the salt particle passing near a single nuclei. और फर्ज करेंगे हमारे पास न्यूक्लियाई की डेंसिटी जो है वो Ni है,
then the total power emitted per unit volume is NENI L square dV. क्योंकि मैंने NI से मल्टीप्लाई कर दिया, so this would then be the power per unit volume. This expression जो कि हमने basically इस फार्मूले से निकाला है, and under this additional assumption that acceleration is only for a brief moment during time delta t, this agrees with the experimental results very well. ये जो B minimum है, ये by the way we can approximate it by the uncertainty principle. It says that the momentum and B minimum product, so V of the order of h cut at minimum, so momentum is mv. So this is an estimate for this value B minimum. अगर आप यहाँ पे put करें, so you can see h cut comes here, so mv. और जो result है वो sensible है, क्योंकि यहाँ पे mv आएगा, यहाँ पे h cut, so ये cancel हो जाएगा, which means that the power is proportional to velocity, which makes sense. जितने ज़्यादा energetic particles होंगे, उतनी power ज़्यादा होगी. Power is inversely proportional to mass. जितने ज़्यादा massive ion होगा, acceleration जो है उसका उतना कम होगा. क्योंकि force तो same होगी for the same charge, लेकिन जो acceleration है वो कम होगा. Plus it is proportional to z. Strong force होगी, strong acceleration होगा. Proportional to E, proportional to the density of electrons, and proportional to density of ions. So let's now see the Fourier cut. अभी तक हमने बात की है कि इसकी टाइम डोमेन वेरिएशन, बल्कि टाइम डोमेन की हमने बात की टोटल पावर की. So that's the total power, and we said that all of that power is emitted approximately in a time delta t given by V over V. So we get all of that power in roughly this time. So already हम ये जानते हैं कि if we have a time interval of width delta t, this means that frequency spectrum will have width delta omega, yes, omega maximum kह लें, which is inversely proportional to delta, right? Or delta t would be smallest when B is minimum. So it means that the maximum omega, a maximum possible frequency is equal to V over B minimum. और अगर B minimum की वैल्यू पुट करते हैं आप uncertainty principle से, you get mv square over h cut. Does this relation make sense? ऐसे ही होना चाहिए. The maximum frequency that we see in radiation emitted from this Bremsstrahlung
should be equal to this. Then all other frequencies should be smaller than this. It makes sense, right? अगर मैं ये h कट उधर ले लूँ तो क्या बना? This is h cut omega max mv square. So this is the energy of a photon. So the energy of light that is being emitted cannot be greater than the energy of the particle. The particles are in the kinetic energy half mv square. So roughly the maximum frequency that we would see is of the order of the kinetic energy of the particle. All other frequencies would be smaller than this. और वो maximum भी हमें कब मिलेगी? When the particle passes closest to the nucleus, that the B is B minimum. So it means that the frequency spectrum can be approximated like this. Since the radiation occurs only for a short time delta t, we can roughly assume the spectrum to be flat until a maximum frequency which is proportional to V over B, because this is inversely proportional to 1 over delta t. Delta t is B over B, so this is B over B, and the intensity can be approximated as total energy emitted per unit frequency. So the radiation intensity है, this is total energy divided by the frequency width, and if we assume that this is roughly a flat spectrum, which is the case because delta t is small, so we can approximate the radiation intensity as total energy per unit frequency. Or delta omega is V over B. Where is E? So there is E. So delta omega है V over B. यहाँ पे V और V हो गया, so V square और B square हो गया. When omega is between 0 and V over B, and this is roughly 0, and omega is greater than. So the frequency spectrum is almost flat in most of the spectrum, and it is 0 beyond a cutoff frequency. The cutoff frequency is given by the kinetic energy of the particle. So this Bremsstrahlung spectrum that we have written here actually approximately agrees with the spectrum that we get very well. और इसको देखें कि हमने 2-3 अप्रोक्सीमेशन में आपको इसमें लगाएंगे, बट स्टिल जो फार्मूले हमने डेवलप किए हुए हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन के इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस, दे एग्री very well with this. For relativistic case, the corrections become actually a bit more trickier initially, क्योंकि आप पावर डेंसिटी का फार्मूला रियली स्पीकिंग ऊपर और नीचे वाला में डिफरेंस है, क्योंकि पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला केस, और इसमें जो कि एक्सेलरेशन में दोनों ही कंपोनेंट है. सो आइडियली व्हेन b is small you should use the parallel approximation. When b is large you should use perpendicular approximation, क्योंकि जब दूर होगा तो it will deflect like this, जो करीब होगा तो it almost deflects like that. और उसके बाद ये जो approximation एक्चुअली ये भी ज़्यादा बेहतर होगी, that it radiates only for a short time, क्योंकि जितनी स्पीड तेज होगी उतना जो है इंटरेक्शन टाइम कम होगा. So this approximation will work bit better. Any questions? So actually आइडिया ये था कि बहुत सारी जो फिजिकल सिचुएशन है जिनमें रेडिएशन
charged particles होती हैं, they can approximately be understood using these expressions for power profiles that we have already developed. अब जो है एक important problem radiation का जो हमने करना है, then we'll switch to the next part of the course, and that is the channel-wave radiation, which we have next class to show. And today in the remaining part, let's do this homework problem. So problem आपका ये था that you have to solve for the green function of this. So physically, this problem relates to this thing. Let's say this is x-axis, y-axis, and this is z-axis. So we have a source which is non-zero at x equal to x prime, and t is equal to t prime. X is equal to x prime is let's say this plane. So this plane that goes to infinity along y and z and cuts the x-axis at x is equal to x prime. This is briefly lit up at time t is equal to t prime. और आपने जो फील्ड है वो इस वजह से फाइंड किया because of this point, this sheet source. इसका तरीका वही था जो हमने क्लास में ऑलरेडी डाउट किया था. You take the Fourier transform of this thing, the three-dimensional Fourier transform in time. जब आप टाइम में Fourier transform लेंगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर प्लस into g, और इसकी जगह पे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t प्राइम. ये माइनस के साथ है प्लस के साथ. Fourier transform will be defined with minus sign, with the ये either plus होगा या माइनस, दूसरे में उल्टा कर देंगे. So ये आगे, और जब आप इसका दोबारा से Fourier transform लेंगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस kx square g of kx omega plus omega square c square g of kx omega, और इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस kx. चलिए जो आपने पहला पार्ट लिखा है kx, आप अभी इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म करके ओमेगा स्पेस के लिए करेंगे. अब ये ओमेगा और ये और let's call this omega over c as some k naught for easiness. अगर आप ये लास्ट अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करें तो g आ जाएगा माइनस, तो इसको प्लस ही कर लें 1 over kx square minus k naught square exponential omega t prime exponential minus x prime. अब हम पहले इसमें कहते हैं कि इसका
kx में ले लेते हैं तो so g in x and omega would be ये तो बाहर आ जाएगा और इसका आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस sin x x और इस तरह से आप इसको कंट्रोल एंड डायग्राम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ये बन जाएगा अब इसमें उसी तरह से लेट्स इंक्लूड you अगर देखें in kx में real of kx matrix of kx there is a pole here let's say you include this pole so kx is equal to k naught but before that you will have to remove this part तो इसको remove करेंगे तो ये इंटीग्रल आ गया and kx equal to k naught you get g as k naught over 2 k यहाँ का प्रोडक्ट इसमें 1 over 2 पाई क्या है राइट क्योंकि इनवर्स ट्रांसफॉर्म में 1 over 2 पाई है तो ये हो जाएगा अब इसका ओमेगा से वापस t में ट्रांसफॉर्म लेते हैं सो ये 4 पाई तो बाहर आ जाएगा बल्कि ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर क्योंकि 2 पाई उसका आएगा ये इनवर्स ट्रांसफॉर्म का एंड वी गेट exponential omega t prime exponential minus omega t exponential omega k naught d omega over अब नोट्स पे और शायद आप में से कुछ लोगों ने भी इस k naught को बाहर ले लिया या इग्नोर कर लिया but we can do that so this k naught is actually omega over c so let me put omega over c here c ऊपर आ जाएगा इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ और ये ऊपर बन जाएगा इधर भी ओमेगा ओवर c पुट कर दो एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा प्लस को माइनस साइन है सो p माइनस t प्राइम और प्लस माइनस x माइनस x प्राइम over c divided by omega ये इंटीग्रल है तो सॉल्व और उसको सॉल्व करने से पहले लेट्स लुक एट दिस थिंग so we have this identity the delta of x is equal to this integral और अगर मैं इसका दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट x डेरिवेटिव ले लूं ये बन जाएगा क्योंकि x सिर्फ यहीं पे है तो डेरिवेटिव इसका आ जाएगा और माइनस नहीं होता k बाहर आ जाएगा ये आ गया माइनस होता k k
सो अगर यहाँ पे k है तो जो इनवर्स ट्रांसफॉर्म है वो असल में इसका फंक्शन का डेरिवेटिव, और इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज किया जब हम यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म लिखे हैं ना, यहाँ से वहाँ पर कि डबल डेरिवेटिव तो डबल आयोटा ओमेगा का स्क्वायर होगा। तो इसको अगर दोबारा डेरिवेट कर लें तो यू गेट टू लेकिन अगर इसका मैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल लें तो ये बन जाएगा और इसका इंटीग्रल लेंगे, इसका इंटीग्रल होता है ये माइनस ए होता के नीचे आ जाएगा तो वो माइनस ए होता है ऊपर प्लस ए होता कर दिए। और जो डेल्टा फंक्शन उसका इंटीग्रल क्या होता है? इफ यू हैव a delta function like this, इसका जो इंटीग्रल है it is actually a step function u of x, क्योंकि अगर जो ज़्यादा ऑथेंटिकल दिखे तो अगर आप इंटीग्रेट करते हैं एंड इफ दिस x नॉट इज स्मॉलर देन 0 तो ये इंटीग्रल क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 0 दिस मस्ट लाई इनसाइड द इंटरवल फॉर दिस इंटीग्रल टू गिव वन, एंड इफ दिस x नॉट इज ग्रेटर देन 0 then this integral is 1. So this is the function that stays the same. If x naught is less than 0, this is 0. If x naught is greater than 1, greater than 0, this function is 1. So this is a unit step function. And to be more precise, आप असल में जो लिखे कि माइनस इन्फिनिटी टू x नॉट इंटीग्रेट कर लें, यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी टू x नॉट इंटीग्रेट करें तो जो माइनस तो ये आ जाएगा 1 ओवर k, तो जो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 आ गया, एंड द अदर x नॉट इज एक्चुअली x नॉट goes. So essentially speaking, a relation is like this. So this is equal to u of x. अब इसकी मदद से you can so iota over 2 pi into this is unit step. So let's put an iota here, an iota here, और यहाँ से 2 pi भी आप अलग कर लें, so you get c over 4 pi, ये iota नीचे रहेगा, ये iota और एक 2 pi इसके साथ मिल जाएगा, and we get a unit step of t minus t prime minus x minus x prime. तो ये आंसर आना चाहिए। दो तो आपको नहीं जैसे ये फॉरवर्ड ठीक है, वो बाकी भी ये कर ले वो कर ले, बस बेसिक फॉर्म में ही हो। हाँ, लेकिन बस दो टर्म दो, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे x माइनस x प्राइम पॉजिटिव है तो अपन 2 ऊपर हाँ दूसरा ले ले तो दूसरा ले ले, वो तो सारी केसेस हम देख रहे हैं, बट द फंक्शनल फॉर्म इज समथिंग लाइक दिस, राइट? And this would, by the way, would be true when x minus x prime is greater than 0, क्योंकि only then ये decay करेगा, तो वो चीजें साथ में। तो अब ये जो फंक्शन है, ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसको आप देख भी सकते हैं फिजिकली कि होना भी ऐसे ही चाहिए। देख सकते हैं इसे, क्यों नहीं? फर्स्ट करें आप यहाँ पे खड़े हैं, तो दिस इज अ पॉइंट x greater than x prime, तो फील्ड क्या होगा? जैसे मैं यहीं पे ले लें, ये जो फ्लोर है, दिस इज योर x इक्वल टू x प्राइम शीट, हम यहाँ पे हैं, अगर ये थोड़ी देर के लिए ऑन हो के ऑफ रही है, तो यहाँ पे फील्ड हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? थोड़ी देर में हमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा,
until the flash from the point straight down below reaches here. ऐसी होगा ना? उसके बाद हमें हमेशा लाइट यहाँ पे नजर आती रहेगी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये वाला तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो ये वाले पॉइंट्स हैं इसके साथ वाले, इनसे लाइट यहाँ पे पहुंच जाएगी, और उसके थोड़ी देर के बाद जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं उनकी लाइट पहुंच जाएगी। अगर तो यहाँ से लाइट ब्रीफली आई है, उसको आगे चली गई है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये आगे वाले एडजेसेंट जो पॉइंट्स हैं उनसे लाइट मिलती है। सो एसेंशियली जो है वो हमें यहाँ पे फील्ड मिलता रहेगा फ्रॉम द पॉइंट्स फॉर्दर अवे एंड अवे अंटिल t is equal to infinity। और अगर से हमें ड्यू टू टाइम गुजर रहा है, ज़्यादा पॉइंट्स से जो फील्ड है वो हमारे तक पहुँच रहा है, लेकिन चूँकि वो पॉइंट्स हैं भी ज़्यादा दूर और सिंगल पॉइंट सोर्स जो है उसकी लाइट चूँकि डिके कर रही है, और व्हेन यू add up all of them you get a constant field। So that's why we have a unit step function like this, that at time t is equal to t, when t is 0 we don't get anything, but when t is equal to, let's say t prime is 0 कर लें, ठीक है, even x prime is 0 कर लें, at t is equal to x over c we see something, and after that we continue to see a constant field। Okay, so this was the problem that was there। और आप नोट कर ले, उसे कैसे समझना होता है कि एंड प्रॉब्लम और any questions? Okay, unfortunately we have to break right now today. In 4 minutes we are starting the mathematical workshop in the basement, so we all continue now। लास्ट अंडरस्टैंडिंग है, दो काफी कम हो रहा है।